नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मन को स्वागत। आपण जदि आम चैनल को प्रथम आछंती दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो आसन देखिए आज गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर जो कि माननीय सुप्रीमकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय आसी जो आम देखा समस्त कर्मचारी मानक कहीपर गोटे खुशी खबर। तो से विषय में आम संपूर्ण आलोचना करवा दयाकोरी वीडियो को शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा आप संपूर्ण खबर विषय जानीपर। तो ये देखो माननीय सुप्रीमकोर्ट राय गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कही जो थे कि सुप्रीमकोर्ट देखूँ कहते कंट्राक्चुअल जो सर्विस अच्छी कंट्राक्चुअल सर्विस रेंडर प्रायर टू रेगुलेशन अर्थात रेगुलेशन पूर्व जो कंट्राक्चुअल सर्विस अच्छी टू बी काउंटेड फॉर पेमेंट ऑफ पेंशनर बेनिफिट ताल पेंशन बेनिफिट कंट्राक्चुअल सर्विस को काउंट करा माननीय सुप्रीमकोर्ट कहते। तो सुप्रीमकोर्ट पार्टली अलाउ an appeal against the high court decision जो होता which denied pension to employee for the period of their contractual service even after they were regularized। ताले contractual service को काउंट करने पेंशनर बेनिफिट जो हाई कोर्ट रे केस होता सुप्रीम कोर्ट रे सेटा पार्टली अलाउ कराए जो देखा सुप्रीम कोर्ट रिएटेड दैट द contractual service period rendered by an employee prior to their regulation must be counted toward the payment of pensioner benefit एटा को काउंट करा जीवो। द कोर्ट पार्टली अलाउड एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट जो कि व्हिच हेल्ड दैट द अपीलेंट जो अछंती हु आर इनिशियली अपॉइंटेड ऑन ए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस सब्सिक्वेंटली रेगुलराइज तापर रेगुलर होते वुड नॉट बी एंटाइटल्ड सीनियरिटी सर्विस बेनिफिट एंड पेंशन फॉर द पीरियड ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस को काउंट करा नहीं। द कोर्ट डायरेक्टेड द ग्रांट ऑफ पेंशनर बेनिफिट जो अच्छी in accordance with the law to the appellant। a bench of justice नरसिम्हा जस्टिस जे बागची अच्छी in light of the clear language of rule 70 जो कौच of the pension rule as well as interpretation of शीला देवी केस रे the contractual service जो रही period rendered to prior to the appellant regulation जोटा कि 2015 must be counted toward the payment of their pensioner benefit in accordance with the mechanism set out in the rule 7 in line with the direction issue in the Sheila Devi extracted here above we directed that respondent Union of India to take immediate step and indicate the mode and manner for the appellant to exercise the option provided under rule 70 of the pension rule as well as to notify amount that the appellant would have to remit in case they obtain for a grant of pensioner जोटा कि अंडर द रूल एयर जो रही अपील कर ब्रीफ फैक्टर देख अपीलेंट वेयर अपॉइंटेड एज डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑन ए टेम्पोरारी बेसिस से अपॉइंट होते कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस अंडर द रेशनलाइजेशन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्कीम परसुएंट ऑर्डर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द रेस्पोंडेंट इश्यू ऑफिस मेमोरेंडम रेगुलर द अपीलेंट सर्विस फ्रॉम ए प्रोस्पेक्टिव डेट द अपीलेंट प्रिफर्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द कैट seeking regulation from the air initial appointment date ru तांको रेगुलर करने पे completing 10 year of service protection of pay तांको दबा पे the grant of seniority service benefit and pension be counted their contractual service period the CAT allowed this application। it is देखिबा the respondent challenge the CAT's order the high court partly allowed the writ petition the high court set aside the CAT direction regarding seniority service benefit and pension तासत देखिए होल्डिंग दैट द अपीलेंट वेयर एंटाइटल्ड द बेनिफिट ओनली आफ्टर रेगुलराइजेशन। ये देखिए कोर्ट रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट रेफर टू रूल 70 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल जो अच्छी 1972 व्हिच डील विद द काउंटिंग सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पेंशन पर्पज। द बेंच नोटेड बिफोर कमेंसिंग आवर एनालिसिस इट इज नेसेसरी टू नोट द स्कोप ऑफ प्रेयर मेड बिफोर द कैट एंड द हाई कोर्ट बिफोर दिस कोर्ट। The prayer before the CAT is for regularization with respective effect, protection of pay, a grant of seniority, service, pension benefit जो दवा पाई counting for the period of contractual service टाकू count करने पाई pursuant to the High Court imposed order जोड़ा कि 23/3/2021 रे उठे थिला only the appellant pay has been protected while their prayer for seniority, service of pension benefit by including contractual period have been rejected जोटा कि हाई कोर्ट रे रिजेक्ट होता। द कोर्ट रिपोर्ट ए डिसीजन इन स्टेट ऑफ एचपी जोटा कि हिमाचल प्रदेश शीला देवी क्षेत्र में होता
wherein it was held that although Rule 2G of the pension rule exclude contractual employee from their application, Rule 70 apply once such contractual employee is regularized on a later date. जोटा कि देखा द कोर्ट देयरफॉर हेल्ड दैट द रूल 70 जो रही apply once a contractual employee was regularized. Upon regularization, the pension rule apply. The Rule 70 provide that past service as contractual employee be considered for calculating a pension benefit. The court therefore held that the Rule 70 apply once a contractual employee was regularized. Upon regularization, the pension rule apply. The Rule 70 provide that the past service जो रही contractual employee मान to be considered for calculating pension benefit. सेठी आम देखा consequently the court order with the above reasoning and direction we partly allow the present appeal and set aside the imposed order of high court. एटी गोटे गुरुत्वपूर्ण राय देते कि मान्यवर सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ कर्मचारी कहीपर गोटे खुशी खबर तो आज यही गुरुत्वपूर्ण खबरटी जदि खबरटी आपको भल लगा दयाकोरी निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे भूलें धन्यवाद।